Very good morning to all of you. Myself Mayur Sagar, Indian Polity by M. Lakshmikant series. Here we are going to cover this textbook in 75 hours of the classroom program. In the previous classes, we have studied about the historical background, the making of the Indian constitutions, and the salient features of the Indian constitutions. Friends, we are studying the chapter number 4, that is Preamble to the Indian Constitution. भारत के संविधान की प्रस्तावना की चर्चा कर रहे थे. In the previous classes, we have seen that how the text of the preamble, which is called the very essence to the Indian Constitution, which is called very summary to the Indian Constitution, and which is the identity card to the constitutions, that the preamble actually possesses the four important components, that is the nature of Indian states in terms of sovereign, socialist, secular, democratic republic, the objective to the constitutions in terms of justice, liberty, equality, fraternity, the date of adoption, and that is the source of authority to the constitution, that is people, and which is on the doctrine of popular sovereignty. Now, friends, we have seen the character of the sovereign, socialist, secular, and the democratic. Today, we will see some of the more important features and some of the other features on this chapter. So let us begin today's class. So friend, the next feature is the republic. Okay, now let us understand the aspect with respect to republic. Here, 2-3 points आप याद रखना. How? That when we say the republic, that first point is with respect to the head of state. ठीक है, head of state. Head of the state दो टाइप के हो सकते हैं, that is elected as well as the monarchical. So in the elected, that state having elected head or that head which is known by the different name, as in case of India it is called President of India. The head of the state is elected for a fixed term, that is 5 years in case of India. If you take up USA, अमेरिका में हेड ऑफ द स्टेट को प्रेसिडेंट बोलते हैं और हेड ऑफ द स्टेट कितने साल के लिए चुना जाता है, दैट इज 4 years. दैट इज यूएसए इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिपब्लिक. बट ऑन द अनदर हैंड मोनार्की की बात करेंगे. सो मोनार्की कैसा होता है, दैट इज हेरिडिटरी इन द नेचर. ठीक है, हेरिडिटरी इन नेचर. और हेरिडिटरी है तो यहां पर इलेक्टेड हेड होगा कि हेरिडिटरी होगा. सो ब्रिटेन जहां पर मोनार्किकल हेड होता है, दैट इज कॉल्ड किंग, that is called crown. Okay, so king or queen, so this do not qualify the republic character. So India is an example of republic because India has a elected head which is known as president, elected for the 5 years. Second character आप क्या रख, what you remember, the second character is the vesting of political sovereignty in the people. in the democracy के discussion में हम लोगों ने क्या देखा था, popular sovereignty. Popular sovereignty means the people are the supreme. But India एक representative democracy है. Representative democracy में क्या देखा था, that it is the government, that is the political executive elected representative that exercise the supreme power. और the representative makes the law. किसके लिए बनाते हैं, the for the people. इसका मतलब the peoples are directly or indirectly represented here. The peoples are indirectly represented. So the political sovereignty का मतलब the political power, the political supremacy कौन एक्सरसाइज करता है, that is representative. लेकिन किसके लिए करता है, people के लिए. सो यहां पर the political sovereignty किनको दिया गया है, to the people. ठीक है, the democracy का एसेंस ही है. the people क्या होता है, center of administration, center of governance, center of activities. ठीक है. थर्ड एस्पेक्ट क्या है, the absence of any privileged class. मतलब कि on the basis of let's say some criteria like race, caste, religion, उसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे. देयर शैल बी इक्वालिटी और दैट एवरी सिटीजन वुड बी इक्वल, ओके, इन एक्सेस टू द पब्लिक ऑफिसेस. हर एक पब्लिक ऑफिस हर एक सिटीजन के लिए इक्वली एक्सेसिबल है, उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा. तो इन द रिपब्लिक पे क्या याद रखेंगे आप, फर्स्ट पॉइंट हेड ऑफ द स्टेट, सेकेंड पॉइंट द पॉलिटिकल सॉवरेंटी पीपल को दिया गया है, थर्ड पॉइंट दैट इज पब्लिक ऑफिस विल बी इक्वली एक्सेसिबल. इट मींस कोई भी प्रिविलेज्ड क्लास यहां पर एग्जिस्ट या प्रिविलेज क्लास नहीं होगा. क्लियर.
Now let's move to understand the next feature. So friend, next feature is justice. Justice का simple meaning क्या है? Reduce the inequality. ठीक है? So the preamble actually embraces three types of justice: social, economic, and political. So justice, the social, economic, and the political. And this social, economic, and political justice कहाँ से लिया गया है? That is the Russian revolutions of 1917. ठीक है? The Russian revolution. Let us understand a little bit. When we talk about the social justice, मतलब reduce the social inequality. Social inequality कैसे हो सकता है? That कोई privileged class है तो reduce that privileged class. Second क्या होता है? That there shall be equality of opportunity for empowerment. ठीक है? मतलब there shall be equal opportunity for development of the people, empowerment of the people, empowerment of the weaker sections as well. Let's say SC, ST, OBC, ठीक है? Women or any weaker section of the society, there shall be equal opportunity. इसका मतलब सोशल जस्टिस का एक एस्पेक्ट एम्पावरमेंट भी है. थर्ड एस्पेक्ट, देयर शैल बी इक्वालिटी, मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, कोई क्राइटेरिया के बेसिस पे तुम्हारे देयर शैल बी दी नो डिस्क्रिमिनेशन. सो सोशल जस्टिस के तीन एस्पेक्ट, दैट इज एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज क्लास, अपॉर्चुनिटी फॉर एम्पावरमेंट, एंड देयर शैल बी इक्वालिटी. कम टू द इकोनॉमिक जस्टिस. ठीक है? इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं. व्हेन वी से द इकोनॉमिक जस्टिस, सो इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब रिड्यूस द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. ठीक है? रिड्यूस द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. इकोनॉमिक इनइक्वालिटी किस टर्म्स में हो सकता है? इन टर्म्स ऑफ द वेल्थ, इन टर्म्स ऑफ द इनकम, इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी. सो वेल्थ, इनकम और प्रॉपर्टी के बेसिस पे जो इनइक्वालिटी है, दैट शैल बी रिड्यूस. दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस. गेटिंग माय पॉइंट? एक कॉन्सेप्ट है इन इकोनॉमिक्स, यू हैव रेड अबाउट द गिनी कोफिशिएंट. ठीक है? गिनी कोफिशिएंट. गिनी कोफिशिएंट बेसिकली टॉक्स अबाउट द इनइक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन. सो इट शैल बी नैरोड. ओके? इकोनॉमिक जस्टिस टॉक्स अबाउट नैरोइंग ऑफ दिस गिनी कोफिशिएंट, दैट इज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. सो इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, इनकम एंड प्रॉपर्टी. नाउ दैट इज इफ यू टॉक अबाउट द पॉलिटिकल जस्टिस. सो पॉलिटिकल जस्टिस के तीन एस्पेक्ट है, दैट इज पब्लिक ऑफिस. ठीक है? सो पब्लिक ऑफिस में इक्वल एक्सेसिबिलिटी होगा पीपल का, दैट इज वन एस्पेक्ट. सेकेंड, दैट इन मैटर ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज गवर्नमेंट एक्टिविटीज, इन मैटर ऑफ द गवर्नमेंट, दैट पीपल हैव इक्वल वॉइस. ओके? इन मैटर ऑफ द गवर्नमेंट पीपल हैव इक्वल वॉइस, एंड इन पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट देयर शैल बी द पॉलिटिकल ऑफिस एक्सेस, गवर्नमेंट में इक्वल वॉइस, एंड दैट पॉलिटिकल इक्वालिटी होना चाहिए सबके पास. ठीक है? The equal political rights, equal access to the political office, मतलब equal political rights. So friends, in case of justice, what you have to remember, that social, economic and political justice. I hope economic justice in wealth, income, property. The political justice मतलब equal rights होने चाहिए, equal opportunity होना चाहिए. In matter of government, equal voice होनी चाहिए. So this is the aspect of justice. And this objective of justice, it is taken from the ideals of justice is taken from Russian Revolution, that is 1917. Let's move to another concept. The next concept is liberty. Liberty को साधारण टर्म्स में, सिंपल टर्म्स में क्या बोल सकते हैं? That liberty है. Liberty मतलब that unnecessary restrictions नहीं है. इसका मतलब इसको बोलते हैं restraints. There shall be no restraint. Second, that opportunity for the development. दोनों ही एस्पेक्ट होते हैं लिबर्टी के. दैट देयर शैल बी एनवायरमेंट, देयर शैल बी ए कंडीशंस वेयर देयर इज एब्सेंस ऑफ अननेसेसरी रिस्ट्रेंट, एंड देयर शैल बी अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट. सो लिबर्टी में दो ही एस्पेक्ट आप याद रखना, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, सेकंड दैट प्रेजेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट, दैट इज द एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी. नाउ लिबर्टी का ये मीनिंग नहीं है कि इट इज लाइसेंस टू से एनीथिंग एज यू लाइक्स. लिबर्टी इज actually liberty. When we talk about article 21, article 21 talks about the right to life and the personal liberty. ठीक है? right to life and personal liberty. And there are कुछ cases हैं like the मेनका गांधी case, that AK गोपालन case, जहां पर इस personal liberty के concept को wide किया गया है. ठीक है? इसके meaning को wider context में समझा गया है. So हम लोग देखेंगे when we talk about the fundamental rights, but for the time being you remember that liberty means absence of restraint. Second, opportunity for development. But it doesn't mean the license to say anything. Article 21 है, it means it's a part of the fundamental rights.
So fundamental rights are not absolute, but it is qualified. इसका मतलब there shall be reasonable restrictions. State उस पे reasonable restrictions लगा सकता है. So and so that since the liberty which is part of the fundamental right, it is also not absolute, but it is qualified. ठीक है? And the ideals of liberty कहाँ से लिया गया है? It is from the French Revolution. That is 1789. This is important. You should remember. So in case of liberty, how you remember? 3 point आप याद रखना. That liberty, that is restraint. Second, that opportunity. Third, it is not license. Rather, it is qualified rights. Okay. Now let's move further. दोस्तों, the next feature is equality. And equality is very essential. Okay. Here, the preamble talks about equality in broader context. That there are the 3 dimensions. You can remember here, that is civic equality, the political equality, and economic equality. Equality को जब आप पढ़ें, a framework you keep in mind, that is equality of status and equality of opportunity. 2 aspect में आप पढ़ें इसको. ठीक है? The equality of status and equality of opportunity. Now, this equality have 3 dimensions, that is civic, political, and the economic equality. ठीक है? So in our constitutions, this equality, that is civic equality, is trying to attain through certain fundamental rights. That is fundamental right, Article 14 to Article 19. Okay. Then the political equality, that is through the 2 article 325, Article 326. And the economic equality, that is through 1 DPSP, that is Article 39. That is Directive Principle of State Policy, Article 39. So, friends, the civic equality, Article 14 से 18 तक की बात करते हैं. What is Article 14? Right to equality. ठीक है? Equality before law and equal protection of the law. Article 15 क्या है? इसको बोलते हैं General Principle of Non-Discriminations. क्या बोलते हैं इसको? Non-discrimination. मतलब state shall not discriminate on the basis of certain ground like religion, race, caste, sex, place of birth. उसको Article 15 में रखा गया है. Article 16 इसको बोलते हैं General Principle of Employment. मतलब equality of employment in the matter of public employment. So Article 16 employment है. Article 17 it is relating to untouchability. Article 18 it is related to what? The titles. That is abolition of the titles. तो ये 4 articles हैं which trying to attain the civic equality. ठीक है? Article 14, 15, 16, 17, 18. If we talk about the political equality, so 2 article important है, 325 and 326. 325 क्या है? That कि electoral rules, कोई भी person, the state shall not deny, कोई भी person का नाम electoral roll में इंक्लूड करने से स्टेट डिनाई नहीं कर सकता. कुछ क्राइटेरिया पे, फॉर एग्जांपल रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, इसके बेसिस पे स्टेट ये नहीं बोल सकता कि उनका नाम इलेक्टोरल रोल्स में वोटिंग लिस्ट में नहीं इंक्लूड करना है. आर्टिकल 326 व्हाट इट से कि जो भी लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली उसका इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज हो. यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज हम लोग बात कर चुके हैं. थर्ड एस्पेक्ट, दैट इज इकोनॉमिक इक्वालिटी. इकोनॉमिक इक्वालिटी, दैट इज डीपीएसपी. That is Article 39. It says that women and men that shall be treated equally. Then equal pay and payment should be there for both men and women on the basis of sex. Shall not be discriminated. ठीक है? Equal wages for equal work. Article 39. Economic equality की बात करते हैं. So equality is a very important concept in terms of status, in terms of opportunity. That civic, political and economic. Friend, civic equality, fundamental rights. ठीक है? Political equality 325, 326. Then economic equality Article 39, that is DPSP. So these are the 3 important aspects which is written in the text. You remember and you should keep it in mind. Let's move to the next feature, that is fraternity. So now next feature is fraternity. Fraternity का मतलब भाईचारा. ठीक है? भाई बंधुत्व. So constitutions or preamble, how it reads, fraternity that assuring the dignity of the individual plus unity and integrity of the nation. जब आप इसको पढ़े यहीं से सारा मीनिंग मिलता है fraternity का. So constitutions basically trying to develop a sense of brotherhood
एंड कॉन्स्टिट्यूशन कुछ फीचर्स इनकॉर्पोरेट करता है, लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ द सिटीजनशिप, लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर आर्टिकल 51A. Article 51A, it says that it shall be the duty to promote the sense of harmony, a sense of brotherhood. So fraternity, इसके 3 एस्पेक्ट हैं, इनको 3 पॉइंट्स में याद रखना. One, it talks about dignity. Second, it talks about unity. Third, it talks about the integrity. Now, when we say the dignity is defined in broader context. The dignity of the individual also include the dignity of the woman. It is an important section because woman is a weaker section. So woman के रेस्पेक्ट में डिग्निटी की बात करता है, दैट कोई भी एक्टिविटी डिग्निटी ऑफ वुमेन के डेरोगेटरी नहीं होना चाहिए, ये वुमेन के स्टेटस को डिसरप्ट नहीं करे. सो डिग्निटी को वाइडर कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन किया गया है. डिग्निटी ऑल्सो इंक्लूड द डिग्निटी ऑफ द वीकर सेक्शन. अभी LGBTQ जो माइनॉरिटी के थर्ड जेंडर ट्रांसजेंडर की बात करता है, सो the constitutions also say that the activity should not disrespect the transgender, third gender class of the people as well. It shall not discriminate the weaker section of the people. It shall not that take up any activity which are derogatory to the women, okay, and weaker section. So this is the dignity. It talks about individual as well as there shall be a dignity of the individual. When we talk about the unity, then unity and integrity. Unity and integrity it is in terms of psychological, in terms of the territorial. Territorial integrity की बात करते हैं. आर्टिकल 1 में क्या डिफाइन किया गया है कि इंडिया दैट इज भारत विच इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स. ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स मतलब इंडिया को इनडिस्ट्रक्टिबल बताया गया है. इंडिया में कोई भी स्टेट्स का राइट टू सेसेशन नहीं है, एक ब्रॉडर यूनियन है विच इज कॉल्ड इंडिया. कोई भी स्टेट वहां से अपने आप नहीं बाहर जा सकता है. ओके, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स. स्टेट्स फॉर्म किया गया है फॉर द सेक ऑफ गवर्नेंस, फॉर द सेक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. स्टेट्स डू नॉट हैव राइट टू सेसेशन बिकॉज इंडिया एक फेडरेशन है जो कि किसी एग्रीमेंट से नहीं बना है. जब हम लोग फेडरेशन पढ़ेंगे देन वी विल सी दैट ए फेडरेशन कैन बी फॉर्म बाय द 2 प्रोसेस, दैट इज प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन एंड प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन. यहाँ पर हम लोग ग्रेटर कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे. अभी बस इतना समझना है कि व्हेन वी टॉक अबाउट द इंटीग्रिटी दैट इज टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इसका मतलब क्या है कि इंडिया विच इज ए नेशन स्टेट इट इज इनडिस्ट्रक्टिबल. इसका मतलब कोई भी स्टेट जो कि इसके कंपोनेंट है दे डू नॉट हैव राइट टू सेसेशन, इस यूनियन से अलग नहीं हो सकता है. दैट इज आर्टिकल 1 एंड दिस इज द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी. It also talks about the psychological integrity. It also talks about psychological integrity. Psychological integrity के मतलब कोई भी ऐसे एक्टिविटी जो इस let's say कोई भी एक्टिविटी लाइक कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, कास्टिज्म, कोई सेसेशनिज्म, रीजनलिज्म, जो भी कि इस नेशनल इंटीग्रेशन प्रोसेस में हिंड्रेंस का काम करता है. ठीक है, उन प्रोसेसेस को ओवरकम करना है, उन प्रोसेस को चेक्स करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है. So this all talks about the psychological integrity. इसका मतलब constitutions and through the preamble it trying to attain or assure the fraternity. Fraternity includes dignity and unity and integrity. Dignity of the individual, dignity of the weaker section, dignity to the weaker class of the society. Unity and integrity, integrity in terms of the territorial integrity plus psychological integrity. Unity in terms of national unity. Clear? That is India which is a diverse country, that here the diversity है but there shall be unity in the diversity. ठीक है, एक single citizenship की बात करता है. So this is all about the fraternity. So friends, we have seen the preamble, it's the basic feature. प्रस्तावना के जो important features हैं हम लोगों ने देखा. हर एक इंडिविजुअल फीचर्स को वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड. सो फ्रेंड्स, यू कीप इट माइंड ऑल द फीचर्स. इट विल हेल्प एंड ट्राइंग टू बिल्ड अप a better understanding of the subsequent chapters, because in this book some features are given but not given in a very elaborate method. So with the help of the videos you try to study the chapter and try to make a simple note so that it will be in your the subconscious mind for the longer period of the time. So in this preamble, that is in the discussions of this preamble, we have seen that preamble trying to incorporate almost all the features which are very elaborately
and very abstractly described in the constitution. Preamble में हम लोग देखे कि in the nature of the state, the meaning of the sovereign, socialist, secular, democratic republic, in the that objective to the constitution, here we have seen the liberty, equality, fraternity, okay? In terms of the justice, that is social, economic and political, we have seen the wider context of that. The fraternity, when we talk about, it not only talk about the dignity, it also talk about that activities should not be taken which are undermining the dignity, respect to the woman, to the weaker section of the society, including the transgenders as well. On the other hand, that it also talks about both psychological and the territorial integrity and the unity. Psychological integrity includes कम्युनलिज्म, कास्टिज्म, रेसिज्म, सिसेशनिज्म, इन एक्टिविटीज को रोकना है. हमें एक नेशनल इंटीग्रेशन अचीव करना है, एंड ऑल द हिंड्रेंसेस टू दिस अचीवमेंट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन दैट शैल बी चेक्ड. On the other hand, the territorial integrity is there. Article 1 that define that India, okay, which is Bharat, which is a union of states. इसका दो मीनिंग होता है, हम लोग बाद में भी पढ़ेंगे. यूनियन ऑफ स्टेट मीन्स दैट इट इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट. सेकेंड, दैट कोई भी स्टेट्स को राइट टू सिसेशन नहीं है, मतलब इस इंडियन यूनियन को छोड़ के जाने का राइट नहीं है. दैट इज द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी. मतलब इंडिया in one line it can be defined at in terms of that is the constitution of India, that is it is the indestructible union of destructible states. स्टेट्स के साथ हम लोग चेंज बदलाव कर सकते हैं, बट इंडियन यूनियन ऑलवेज एग्जिस्ट. ओके, सो दैट इज अबव ऑल. So that is under the territorial integrity. On the other hand, that is in liberty, we have seen the liberty, that is the absence of restraint plus presence of opportunity for the development. It is very essential. When Ambedkar said that the social justice, we have seen in the social justice recognizes for what? Liberty, equality and fraternity, which is the trinity in unison. So liberty, equality, fraternity, it cannot be divorced or will exist, and it will help to attain what? That egalitarian society. Egalitarian society, next time आप सुने तो you should remember all these aspects. It is an equal society. It actually render a justice, social, economic and political to all class of the people. That it lives in an environment of the social and economic democracy. ठीक है? It lives and it actually talks about the social, economic and political justice. Also we have seen the very wider context of the democracy, that the social and economic democracy, it constitute the distributive democracy, okay? Distributive justice, that is social and economic justice. So and so, the democracy in terms of the government, in terms of circular flow of information, in terms of the conditions, we have defined that how it actually based on the doctrine of popular sovereignty. Getting my point? So, all those aspects trying to brief our Indian constitutions. So friends, today we are concluding the lecture here. So I hope these lectures would be helpful to all of you. So try to read the chapter, because when you prepare for civil services examination, it requires a resilient and a determined system. You should be determined with your preparations. Okay, it is above all. So we will again appear with the further concept with the chapter, and all these background will help you to understand the subsequent chapters in this textbook. So thanks for the watching. Keep watching the videos. Also share with your friends, with the near and dears, with the people. Simultaneously like and subscribe the channel if you're new. And at the same time, you go through the previous one if you missed anyone. So stay safe, stay healthy. Goodbye. Have a nice day. Thank you very much.